Hi guys, welcome to the Good Life Plan, and tonight we have a very special guest with us. She's colorful, unpredictable, a mixed bag of paradoxes, and obviously all these attributes make her a super engaging and entertaining storyteller. So tonight, for the first time in the Good Life Plan, we have the city of Jaisalmer. पर एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर जो आप सोच रहे हैं कि वो आपको वही जगह बताएगी, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताएगी या बेस्ट होटल्स टू स्टे, बेस्ट फूड टू ईट, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इंस्टेड शी इज़ गोइंग टू शेयर हर कलर्स विद यू, or rather she is going to show you her true colors, and no pun intended. So she is going to flaunt her beauty through her sunrises and sunsets, and also her wrinkles etched on the sand. वो अपने गाने सुनाएगी, द वंस दैट शी हम्स इन द साइलेंस ऑफ द डेजर्ट, और वो बेसुरे बेढंगे गाने भी जो वो सड़क के बीच में और क्राउडेड कैंप्स में गाती है. She is going to talk about the stories which she has eavesdropped upon in the alleys, and also the ones जो बड़े मज़े से she concocts within the walls of her temples and her forts. उन लोगों से मिलवाएगी जिनको वो प्यार करती है, the ones she cherishes and preserves in her secluded villages, and also the ones that she laughs and mocks at. Monkeys, she calls them, as they eat and litter. So basically she's going to bear it all, the glamour, the simplicity, the love, the deceit, the sound, the silences. अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस कहानी के 3 सूत्रधार हैं. जूनियर मैं, सीनियर प्रतीक, ठीक है. और मैं ये आउट ऑफ ह्यूमिलिटी नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रतीक के साथ हैं हमारे तीसरे सूत्रधार, जिनका नाम मैं हमेशा गड़बड़ करती हूँ, फूजी फिल्म्स GFX 100, हमारा कैमरा. तो ये महाशय हमारी ज़िंदगी में 3-4 साल पहले आए थे, और प्रतीक के गले से लटक के और कंधे पे बैठ के इन्होंने हमारे साथ ज़िंदगी देखी भी है और दिखाई भी है. इनको अलमारी में बंद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो थोड़े दिन के बाद जब अलमारी से ये बाहर निकलते हैं तो थोड़े टेंट्रम थ्रो करते हैं. तो इस बार भी उन्होंने किया, बट जैसे ही प्रतीक के साथ इनकी सिंक बन जाती है तो स्टोरी टेलिंग का एक अलग ही डायमेंशन आता है, क्योंकि दोनों ही सिर्फ शक्ल नहीं सोच भी पकड़ लेते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स ओपन द फ्लोर टू प्रतीक एंड आवर कैमरा. Thank you, Sudipta. That was such a beautiful and lucid description of the city. It was our anniversary and we went to Jaisalmer. And this time I packed more than a simple travel kit. My GFX 100S. Okay, I missed the S. It doesn't matter. And with its 3 lenses, the long, the medium and the short lens, tripod, a Nikon speed light, trigger, all went in an effort to capture some special moments. And this kind of elaborate kit I don't take on flights. The last time I had used it was in Ladakh. So my intent was to shoot landscapes. Now I had seen pictures of Jaisalmer on the web. Some were very beautifully shot landscapes, lovely compositions, colors, making the place look exotic and fantastic. Some, like most travel pictures, shot on a simple camera or a phone and stuff. So Jaisalmer was generally etched in my mind. A rough sketch of it was there in my mind. Now I have a particular impatience with vanilla landscapes. Those lovely beautiful flowers and evening lights or morning glow on the mountain sides and all those things. They capture my interest for a brief moment and then I carry on. Unless something, and there are plenty of those as well,
some of my friends have taken those pictures, they connect with me, resonate with me, with my life, its aspirations, its fears and anxieties, hope as well. So when I intend to take a landscape picture, it must be a landscape of me. I don't know whether it makes sense to you, but unless the landscape or the scene in front of me describes me and my state of mind, I don't take it seriously. So this time, since it was our anniversary, we were in a place of great scapes. I knew that my landscape is more than that. My landscape is Sudipta. She is my perpetual landscape. Now I must say this with certain amount of pride and contentment, that our lives are such that work isn't drudgery. So there's very little difference between a vacation and a non-vacation. I mean, we are not taking time off work. It's just a shift of landscape, reiterating that, and a conscious effort to rejuvenate ourselves with much cleaner air. So here, with our elaborate camera equipment and all, we landed in Jaisalmer. As a Jaisalmer diary, I present to you some of these pictures. As I said earlier, my landscape is Sudipta, and some of these pictures have Sudipta in it physically, and some her feel. Now I'm a believer, a worshipper, a follower of quantum physics. I follow it. All of us are fields. So fields of influence. So here we are. I'll begin with this picture, and you can see the elements, and I hope it stirs your imagination to see what I'm trying to convey. Every element makes sense to me. If it doesn't to you, it doesn't to you. It's not your landscape. It's my landscape. And so in this picture as well, Sudipta is watching the sunset, and there are two paragliders buzzing about like irritating flies on the horizon. But they were not disturbing me. In fact, I could have removed it from a very efficient removal tool in Photoshop, but I chose not to. Everything at that moment made sense to me. The beautiful colors, the sand, the waves, and Sudipta standing and watching the sunset while the paragliders were moving around. I don't know whether they saw the sunset at all or not. However, Sudipta is watching them, and the whole moment is so beautiful. It may not be in a conventional way a very exotic landscape, but it's my landscape. Mind you, nothing was planned. It just happened, and because the whole idea lay at the back of my mind, and things just turned out so beautiful for me. Jaisalmer gave me the backdrop appropriate to my emotion. Now, not every landscape has Sudipta's physical presence in it. This one of my favorite, has an erotic whisper. And
this one too. However, this picture speaks more than my relationship with Sudipta. I have other relations and relationships as well. This is a picture of loneliness, bordering on abandonment. This particular moment just brought me face to face with that moment when I consigned my father to the furnace. I felt terribly lonely after that. But then Sudipta was by my side and I cried upon her shoulder. So Sudipta is there, looking after my loneliness. Now, this scene makes me feel like a man. You might wonder how. That is for you to figure it out. This is a very interesting picture for me. The space between Sudipta and I speaks a lot. The space between us and its valency. If you do not know what valency is, look it up in the dictionary. It's a very interesting character. And I use the word valency very deliberately. Sudipta and I have worked on projects together and actually are working on other projects as well right now. We wrote a book together. We have written stories together. We have worked on good life plan together. We travel together. We live together. Yet, we give each other ample space to explore the world in our own manner. I'm more gravitating towards stoicism, while Sudipta doesn't quite give that idea much thought. So, and it's very important that she has her own way of dealing with life and its situations. So this is a vision of us having space connected to the purpose of our life together. Then comes the city of Jaisalmer itself. Jaisalmer is cool, just like Goa. And if you stretch your mind, the desert resembles the sea. Just gaze at the sky and the differences blur. There are plenty of rooftop, small restaurants and cafes where you can just chill, have beer. And mind you, the beer is served at the price written on the bottle. Best part is they serve strong beer as well. My favorite. And chilled also. And chilled. Jaisalmer wears colors like jewels. Actually, most of India is like that. No, I do not know of any place that has so much color in its life the way India has. These pictures say enough. However, despite its vibrance, I found an undercurrent of loneliness in its nature. And it's not surprising. After March, the world almost abandons the city and leaves its streets for more hospitable environment. Trade comes to a halt. Heat, dust and isolation roam the streets of Jaisalmer. All of it is accepted as a fact of life. I asked many, what do you do in summer? He said, nothing. Nothing. So they just come to the shop, open it, dust it, and then after a while just leave and go home. And then what do you do at home? Nothing. There's nothing to do.
So, such an acceptance is prevalent amongst all in Jaisalmer. The next scene shows the level of accommodation in Jaisalmer. A herd of divine bovine found a nice place for an intermission from its hectic life. Bang in the middle of a street. No one disturbed them. All negotiated through the looming mass without complaint. And here we have an important trans-species conference. Again, it's just the way life is. I won't share pictures of the famous Jaisalmer fort. They are just charming pictures. They don't reflect my state of emotion. However, we met a very important, a very interesting and a nice person in Jaisalmer, and Sudipta is going to speak about him in the next part. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रतीक की कहानी अच्छी लगी होगी, पर एक कहानी के दो बड़े इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं. एक तो शुरुआत, जो कि आपने सुनी, हमारी एनिवर्सरी थी एंड वी वांटेड टू सेलिब्रेट इट टुगेदर इन जैसलमेर, और दूसरा होता है प्लॉट ट्विस्ट. तो मैं थोड़ा सा आपको इस प्लॉट ट्विस्ट के बारे में बताती हूँ. हम जैसलमेर बहुत आराम से पहुँच गए एंड वी वर ग्रीटेड इन स्टाइल इन अ कार विच वॉज सुपर क्लीन फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड, और हमें गणपत जी मिले. तो गणपत जी जो थे, उनके मैंने पहले नोटिस किया कि उनके कान में एक डायमंड का स्टड जैसा कुछ था, और प्रिंटेड शर्ट्स में बाहर निकले, हमसे मिलने आए. बहुत ही पोलाइट थे, और वो 40 किलोमीटर का जो हमारी जर्नी थी फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सैम ड्यून्स और सम ड्यून्स जो भी कहा जाता है, जहाँ हमारा फर्स्ट स्टे था, उसके बीच में वो प्रतीक उनसे सवाल पूछते गए. वो बड़े करेक्ट कोइंसाइज सिर्फ उतना ही जवाब देते थे जितना हम उनसे पूछते थे, उससे ज़्यादा नहीं. सो ही मेंटेन्ड अ डिस्टेंस बट ट्रीटेड अस वेरी वेरी वेल. उनके चलते हमें गाड़ी से उतर के पानी की बोतल नहीं खरीदनी पड़ी, वो बोतल वाले गाड़ी में पानी देने आते थे. तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पहुँचे, और मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी, मैं उस जगह के बारे में आपको बताती हूँ. वो जगह जो थी बिल्कुल परफेक्ट थी उनके लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं. तो जो हमें जब हमें कमरे में ले जाया गया, मैं आपको कमरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ. कमरा जो था वो वहाँ बिस्तर पे मक्खियाँ मरी हुई थी, स्विच बोर्ड्स गंदे थे, दरवाज़ा बाथरूम का जो था वो टिन का बना हुआ था, और धक्के या हवा का इंतज़ार नहीं करता था, वो सिर्फ आपके सोच से खुल सकता था. और अंदर बाल्टी में आधी बाल्टी पानी थी, तो मेरे ख्याल से वो पीछे जो गेस्ट थे वो नहा के निकले थे, तो इन लोगों ने वो पानी भी संभाल के रखी हुई थी. एंड ऑब्वियसली लाइटें जल नहीं रही थी, बोतलें, देयर वाज नो वाटर बॉटल, नथिंग. एक जग था जिसको बजा के आप गाना गा सकते हैं शायद, इतना खाली और इतना बेढंगा सा था. सो ऑब्वियसली टू से वी वर डिसहार्टन वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. अब समहाउ दे वर डिसीटफुल एनफ टू टेक 3 दिन का पहले ही उन्होंने पैसे ले लिए थे हमसे. सो वी वर वंडरिंग कि अब हम करें तो क्या करें, यहाँ से निकले कि ना निकले. शुड वी एक्सेप्ट आवर फेट एंड जस्ट स्पेंड द 3 nights ओवर देयर. बट फॉर्चुनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी रिजॉल्व हो गई अगले 5 मिनट के अंदर. तो एक there was this young man or boy, वहाँ ज़्यादातर ये these campsites are taken care of by young boys. तो वो आए एंड उनके हाथ में एक बड़ी सी किताब थी. there was a hefty book with more photoshopped images of जैसलमेर. और तब तक हम रियलाइज़ कर चुके थे that this they had taken, I mean we knew कि अब जो बातें होंगी और किस तरह की बातें होंगी, we kind of knew the kind of people we were interacting with. तो महाशय आए और उन्होंने खूब सारी अपने डेजर्ट सफारी कब होगी, जीप सफारी को भी सारी बातें बता रहे थे. तो प्रतीक ज़्यादा पेशेंट हैं, वो सुन रहे थे, मैं उबल रही थी, तो ऑब्वियसली मैं उन्हें 3 बार टोकने की कोशिश करी, बट तब तक मैं समझ गई थी कि वो घर से जितना पढ़ के आए हैं वो पूरा बताएंगे. एनी हाउ, फिर उन्होंने मैजिक वर्ड्स कहे,
शाम को 7 बजे डीजे बजेगा, एंड दैट वाज इट. डेजर्ट में डीजे वाज नॉट हैपनिंग फॉर अस एंड वी फ्लेड फ्रॉम देयर. पर 40 किलोमीटर दूर जाएं तो जाएं कहाँ, करे तो करे क्या. फॉर्चुनेटली हमने गणपत जी को फ़ोन किया. अब गणपत जी जो हैं आसपास ही थे. वो आ गए हमारे पास एंड ही वाज सो स्वीट एंड सो काइंड. उन्होंने उठाए, खुद अपने हमारे सूटकेस उठा के उन्होंने गाड़ी में रखे और फिर उन्होंने एक जगह सजेस्ट करी. तो यहाँ मैं ये ज़रूर एम्फेसाइज करूँगी, वो जितने भी बातें करते थे वो कभी बताते नहीं थे कि आप ऐसा करो या ऐसा जाओ. वो सिर्फ सजेस्ट करते थे और वो खुद कहते थे कि आप देख लो, आपको अच्छी लगे तो आप यहाँ रुक जाना, नहीं अच्छी लगे तो कहीं और चलेंगे. So that was very reassuring, very comforting for us. And then he took us to a different place and it was better. काफ़ी क्लीन था. हमें पता था हम कैंप में रहने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई डिमांड भी नहीं थी. Anyhow, तो ये जगह जो थी काफ़ी साफ़ सुथरी थी and it was cleaner and the people were nicer. And that's when we realized that they had, the previous camp had taken the photographs of this place and posted it online. And this seems to be a ritual. I mean, many people do it. It was nothing abnormal. So बहुत जगह ऐसे होती हैं. वो बाद में हम जब सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे हमें कहा गया. Anyhow, so we settled down and we decided to explore sand dunes at our own pace. तो उस शाम को गणपत जी ने हमारे लिए एक डेजर्ट सफारी ऑर्गेनाइज करी और जबकि वो गाड़ी उनकी नहीं थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, फिर भी वो रुके रहे हमारे साथ जाने के लिए. एंड वी एक्सपीरियंस्ड द मोस्ट मैजिकल सनसेट एवर, जिसकी आपने अभी फ़ोटो देखी. डिस्पाइट द कार्स एंड द जीप्स एंड द पैराग्लाइडर्स, द सन बीम्ड in yellow and the desert stood still as if it was just telling us that it's only in the true power resides only in the silence. और गणपत जी इस मोमेंट के हमारे हिस्सेदार थे. तो और ये इतना मैजिकल था, वो मैजिक इतनी देर चली हमारे साथ कि वी केम बैक टू द कैंप अगेन अ कोकोफोनी ऑफ साउंड्स. अब आवाज़ की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी एटीट्यूड की थी. तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी 7 बजे नहीं 9 बजे तो डीजे बजा. अब अगेन इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर अस एंड वी वर जस्ट वंडरिंग अब हम क्या करें. तो हमने फिर गणपत जी को फ़ोन किया एंड वी वेंट फॉर अ नाइट सफारी. हमने सोचा दिन में तारे तो बहुत देख लिए, आज रात को देख लेते हैं. हाँ, एंड लक की बात ये है कि वो मूनलाइट, फुल मून नाइट था, ऑलमोस्ट फुल मून था, शायद बिल्कुल फुल मून था. फुल मून में तो तारे दिखने से रहे. सो वी वर अगेन डिसअपॉइंटेड. आई थिंक दिस वॉज द पॉइंट where we kind of realized where we were going wrong with this trip. We wanted to experience the stars in the desert. We wanted a clean camp. We wanted the people to behave in a certain way and so on. So we wanted. But we completely forgot the most important part of this travel was to see Jaisalmer. And this is how she was unveiling herself. We were not her guests, जिनके लिए हम वो मेहमान नहीं थे, जिनके लिए कमरे साफ़ किए जाते हैं, चमकती हुई कटलरीज निकाली जाती हैं और बच्चों को कहा जाता है भाई अंकल आंटी आ रहे हैं तमीज़ से रहना. वी वर फ्रेंड्स with whom she was sharing her stories. And as storytellers ourselves, we knew what we had to do. We had to step back and listen to her. I think that's the point. This trip became a wonderful journey, beginning of a new chapter. और ये सारी बातें इसीलिए पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ दिस अश्योरेंस एंड द कंफर्टिंग प्रेजेंस ऑफ गणपत जी. वो आए तो थे हमारे ड्राइवर बन के, बट वो टूर गाइड बन गए और जब हम आए वहाँ से वो एक ऐसा लग रहा था किसी दोस्त को छोड़ के आए हैं. तो वो आखिर तक एयरपोर्ट तक हमें छोड़ने आए. मेरे ख्याल से उन्होंने 1-2 सवारी भी मिस कर दी होगी बिकॉज ऑफ ऑल दैट, बट उनकी बड़ी साइलेंट सी, बड़ी काम सी प्रेजेंस थी. और मेरी और प्रतीक की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारे जो भी एपिसोड्स हों और जो भी हमारे ट्रैवल एपिसोड्स हों उसमें हम इंक्लूड करते हैं उन लोगों को जिनकी वजह से वो ट्रैवल स्पेशल होती है. सो दैट्स वाई वी हैव दिस स्मॉल इंटरव्यू. हमने इंटरव्यू भी नहीं कह सकते, आखिर दिन हम लोगों ने बैठ के हाँ बातें करी, प्रतीक ने उनसे बात करी और हम वो आपसे शेयर कर रहे हैं. और मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि
उनके डिटेल्स हम शो नोट्स में शेयर करेंगे. कभी भी आप जैसलमेर जाते हैं तो उनसे यू कैन कॉल हिम अप एंड ही विल ऑर्गेनाइज. होपफुली ही विल बी अराउंड एंड ऑर्गेनाइज a tour for you. So why I am suggesting Ganpatji is because of the transaction of a very very important currency, the currency of trust. He could trust us, we could trust him. So मेरे ख्याल से किसी भी ट्रैवल में इस करेंसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो on that note we just share this small interaction Prateek had with Ganpatji. तो गणपत जी बहुत चीज़ों में मेरी नज़रें काफ़ी शार्प हैं. बिल्कुल. तो सबसे पहले मैं देखता हूँ किसी से भी मिलता हूँ जी सर. कैसे वो दिखते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं. बिल्कुल. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे प्रभावित करी थी कि आपकी गाड़ी अंदर से कितनी साफ़ है. जी सर. मैं बहुत खुश हो गया था. जी थैंक यू. और जो भी कोई किसी भी चीज़ का ध्यान रखता है उस पर ध्यान दिया जाता है. बिल्कुल. मुझे ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने अपनी गाड़ी का ध्यान रखा. तो सुबह मतलब आप रोज़ अपनी गाड़ी साफ़ करते हैं? हाँ, सुबह से जो भी टाइमिंग होता है उससे आधा एक घंटे पहले पूरी गाड़ी साफ़ कर देते हैं. और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ डेजर्ट एरिया है तो गाड़ी 10 मिनट में गंदी हो जाती है वापस. हाँ. क्योंकि यहाँ पे ऐसी सड़कें हैं जो खड्डे खुड्डे भी है और धूल भी है, मिट्टी भी है. थोड़ी सी हल्की सी आंधी चल जाती तो वापस गाड़ी गंदी हो जाती. लेकिन एक बार मेरी तरफ से मैं क्लीन कर देता हूँ पूरी. जी. और अपने परिवार को कितनी बार घुमाया इस गाड़ी में? काफ़ी बार घुमाया सर. अब मंदिर वगैरह जाते हैं. अच्छा. और मेरा ससुराल है यहाँ से 300 किलोमीटर है. अच्छा. तो उनको कभी छोड़ने या बच्चों को लेने वगैरह जाता हूँ. अच्छा. तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि भाई यहाँ अपनी खुद की गाड़ी है. तो पहले मेरे पास नहीं थी, मैं किसी और ट्रेवल्स की चला रहा था. 6 महीने चलाई मैंने, उसके बाद में ये ली मैंने. ये ली थी जब भी मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये थे. अच्छा. सिर्फ 2000 रुपये थे. मैं यहाँ से गुजरात गया था गाड़ी लेने के लिए. वहाँ गुजरात से ये लाया, फिर यहाँ की पार्सिंग करवाई मैंने. अच्छा. फिर जी मैंने पूरा जो भी पैसे वगैरह किसी से दोस्त फ्रेंड से उधार लेके पूरा लिया और फिर 1 साल में पूरा उनको वापस कर दिया था. अब मेरे पास ये गाड़ी मेरा खुद का है, कोई किसी का कोई. जी सर. तो गणपत जी हमारा जो चैनल है ना वो स्वास्थ्य से भी उसका रिलेशनशिप है. रिलेशन. हाँ? राइट. हम इसको अपने चैनल को गुड लाइफ प्लान गुड लाइफ प्लान प्लान एक प्लान है जो कि अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है. जी बिल्कुल. हाँ? जी. उसमें सेहत सेहत. हाँ? राइट. एक बहुत ही अहम जो है वो एक हिस्सा है हमारे हम दोनों का. हम आपने देखा ही होगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग अपना सेहत का ध्यान रखते किसी हैं. भी चीज़ में आप दोनों में मैंने एक चीज़ ये भी देखी, आलस नहीं करते. भाई कहीं 1 किलोमीटर जाना चाहे 5 किलोमीटर जाता आप बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम हम चले जाएंगे. काफ़ी क्लाइंट होते हैं कि गाड़ी वहाँ खड़ी करते बोले नहीं होटल के नीचे लेके आओ. अच्छा. तभी हम निकलेंगे, हम नहीं चल पाएंगे. भले वो यंग ही हो, आज के भी हो, चाहे 15-20 साल के हो. वो चीज़ आलस होती है, वो मैंने आप में नहीं देखी. तो हम लोग जो है ना ऐसा अपने सेहत को अपने आसपास अपने समाज में ऐसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जी सर. जिससे कि लोग जो है ना स्वस्थ रहें. हाँ? बिल्कुल बिल्कुल. तो स्वास्थ्य का तो आपके पास टाइम मिलता है कुछ एक्सरसाइज करने का अपने शरीर में? ऐसा कुछ नहीं. अच्छा. और वैसे तो आप फिट हैं. क्या उम्र है आपकी? मेरी 35. 35. हाँ? और कुछ खाने पीने में कुछ आपने परहेज़ या कुछ इस तरीके से डिसिप्लिन रखा हुआ है कि जिसकी वजह से जिससे कि थोड़ा सा आपको लगे कि भाई मैं स्वस्थ रहूँगा, आगे इससे बीमारियाँ नहीं. कुछ ऐसा रखा हुआ है आपने अपने को कंट्रोल में किसी तरीके से? कंट्रोल में यही है बाकी स्मोकिंग वगैरह नशा वगैरह मैं आज तक किया नहीं करना भी नहीं चाहता हूँ कभी भी. हाँ. ऐसी काफ़ी लोगों की हालतें देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी लगती है भाई नहीं करनी चाहिए. तो वो मेरी है कि मैं नहीं करूँगा कभी भी. बाकी खाने पीने में मैं सब चीज़ देसी चीज़ें घर पे जो बनाते वही खाता हूँ ज़्यादातर. हम जैसलमेर में हैं तो ज़्यादातर शाम को घर पे ही खाना खाते हैं. और बाकी कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह में वो सादा सिंपल खाना खाते हैं. आपका फेवरेट खाना क्या है? क्या आप खाना पसंद करते हो? फेवरेट वही हमारा जो देसी है बाजरे की रोटी और अच्छा. कैर सांगरी ग्वारफली जो हमारे राजस्थान में सब्जियां वगैरह होती है वो. बस यही चीज़ है. बाकी ये चाइनीज़ आइटम वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं. अच्छा. तेल वगैरह जो बनते हैं वड़ा पाव समोसा ये मैंने आज तक खाया ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं. लगता भी है सही. नहीं मैं खाता ही नहीं क्योंकि मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ी कर देती है इसलिए मैं खाता नहीं. और बच्चों को क्या आप शिक्षा देना चाहते हैं?
क्या सिखाना चाहते हैं? मेरी कोशिश है पढ़ाई की है, मैं करवा रहा हूँ अभी। छोटा बच्चा एक तो 2 साल का है और एक 2 बड़े बच्ची और लड़का वो स्कूल जाते हैं। अभी स्टार्टिंग ही है, उनका इतना नॉलेज है नहीं। बस वही है, जितनी मेरी मतलब उस हिसाब से जितना हो सका उतना पढ़ाई की है, और क्या कर सकते हैं। और आपका फ्री टाइम जो होता है वो कैसे बीतता है? मुश्किल है सर, गर्मियों में तो वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे काम कुछ है नहीं, टैक्सियों का बंद हो जाती है टैक्सियाँ, टूरिज्म आते नहीं है। लोकल आपने देखा ये सिटी इतना ही बड़ा है, फोर्ट के ऊपर से आप चारों तरफ फ़ोटो ले सकते हो। सिटी की इतनी बड़ी है और आबादी बिल्कुल है नहीं, काम कुछ है नहीं किसी के पास, बस घर पे ही बैठे रहते हैं। जो अभी जो हम कमा रहे हैं उसमें मैनेज करना पड़ता है सर। तो सारा अगले 6 महीने जो है इसी में निकले? जी बिल्कुल, कभी कभार 1-2 टूर मिल जाते हैं। कभी किसी हमारे यहाँ की बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, जोधपुर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के, या कोई शादी में कोई फंक्शन पार्टी में, तो कभी छोटा मोटा किराया मिल जाता है। बस वही, उससे गुजारा चलता है। बाकी ऐसे कोई 4 महीने पे डिफरेंट है पूरा, 4-5 महीने। जी सर। So, as you may have seen, the acceptance, hopes, aspirations of a lovely person from Jaisalmer. With this, we are ending this episode. But before we go, I'll take the liberty of sharing one more photograph. This was taken in the moonlight safari we did together. And I was fumbling and with the camera and its exposures and all those things. Again, an unexpected interaction with the self, I would say. Not a very accomplished photograph technically, all blurred, but it conveys more than anything in this diary. It speaks of a journey, a travel. There are lights in the far right part of the horizon. Maybe our destination is visible and we are not there yet. Maybe not, or all the memories that have been left behind. But the journey goes on. I'm sure you can see it. If you can't, you can't. With that, we end this special episode of the Good Life Plan. Hope your journey is also full of adventures and some surprises, because without surprises, a journey is never complete. A surprise makes a journey. Thank you so much. Thank you and good night.